Good morning, students. In this class of mathematics, I am going to describe you about zero of a polynomial, because if you start next exercise to solve, then you will come across zeros of a polynomial. What is the zeros of a polynomial? बहुपद का शून्य. So, at first I am going to clear what is the zero of a polynomial. Zeros of a polynomial, important topic. Zeros of a polynomial. Let Px be a polynomial. Let Px be a polynomial. Let Px be a polynomial if P alpha बराबर 0. If P alpha is equal to 0, then we say that alpha is a polynomial of Px. जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद का शून्य क्या है? लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल. मान लिया कि हमें पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है बहुपद. इफ पी अल्फा बराबर 0, देन वी से दैट अल्फा इज ए पोलिनोमियल. अल्फा इज ए zero of the polynomial. Alpha is a zero of polynomial. बहुपद का शून्य. यदि Px कोई बहुपद है और इसमें Px में यदि x का मान अल्फा रखने से यदि Px का मान 0 हो जाता है, तब हम कहते हैं कि अल्फा बहुपद का शून्य है. एग्जाम्पल टू क्लियर zeros of polynomial, I take some example. Px बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. You are given a polynomial Px बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. Px बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. You have to find the zero of the polynomial. To find the zero of the polynomial, we replace x by any number. To find the zero of the polynomial,
zero of the polynomial px we replace x by 2. We replace x by 2. बहुपद x³ + 2x² - 5x - 6 का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम x के स्थान पर x का ऐसा मान रखेंगे जो मान ये बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px we replace x by 2, then p2 बराबर 2q plus 2 into 2 square minus 5 into 2 minus 6 is equal to 8 plus 8 minus 10 minus 6 is equal to 16 minus 16 is equal to 0. Hence 2 is a 0 of the polynomial. 2 is a 0 of the polynomial px. Try to understand, dear students. I take some example to find the zero of a polynomial. To find the zero of polynomial px, we replace x by any number. समझ गए? If we replace x by 2, then p2 बराबर 2q plus 2 into 2x square minus 5 into 2 minus 6 is equal to 8 plus 8 minus 10 minus 6 is equal to 16 minus 16 is equal to 0. Hence 2 is a 0 of the polynomial px, because putting x बराबर 2 in place of x, we find a result p2 बराबर 0. Hence 2 is a 0 of the polynomial px. Similarly, you can find the 0 of polynomial, and the definition of 0 of polynomial is given. Let px be a polynomial if p अल्फा बराबर 0. px कोई बहुपद है और यदि p अल्फा बराबर 0 है, तब हम कह सकते हैं कि अल्फा बहुपद px का शून्यक है। इसके लिए शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद में x का ऐसा मान रखेंगे जो मान रखने से ये पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। तो इसी कारण हमने यहाँ पर x का मान 2 रखा। 2 मान रखने से ये बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो 2 मान रखने से ये बहुपद 0 के बराबर होता है। इसी कारण से 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। Similarly, you can find, if you have to check whether the given polynomial, whether the minus 2, 2 are 0 of the polynomial, to check that you replace x by given number. If the result is 0, then the value of x will be the 0 of the polynomial px. Another example, and you have to check the given value
are the zero of the polynomial. Check whether minus 2 and 2 are the zeros of the polynomial. Minus 2 and 2 are the zeros of the polynomial x plus 2. You are given a polynomial x plus 2 and you have to check that minus 2 and 2 are the zeros of the polynomial. To check these values, px is equal to, we have px बराबर x plus 2, replace x by minus 2, replace x by minus 2, p minus 2 is equal to minus 2 plus 2 is equal to 0. Here value of polynomial is equal to 0. px बराबर 0, hence minus 2 is the zero of polynomial. Hence minus 2 is a zero of x plus 2. Similarly, to check 2 is a zero of the polynomial. Again replace x is equal to 2 in x is equal to 2, replace x by minus 2, replace x by minus 2, then p2 बराबर replace x by 2, then p2 is equal to 2 plus 2 plus 2 is equal to 4. Here p2 is not equal to 0. Here p2 is not equal to 0, so 2 is not a zero of polynomial. 2 is 0. In this way, if you have find a zero of the polynomial, I had told you that to find the zero of a polynomial, you replace x by given number. If the result is 0, then the value of x is called a zero of polynomial. If let px be a polynomial, if p alpha is equal to 0, then we say that alpha is a zero of the polynomial. I solved 2 examples of exercise. Next exercise, polynomial. I advise you to, at first, you will solve all examples of this exercise, and after that you will try to solve in exercise. I hope that you will
you will be succeed. Thank you.